तो अभी हम लोग नीचे उतर चुके हैं रिजॉर्ट के और अभी हम लोग जा रहे हैं स्नॉर्केलिंग स्कूबा डाइविंग वहाँ पे, जहाँ पे वो आगे थोड़ा सा नज़दीक एक बीच है वहीं पे। तो कल हम लोगों ने चेक किया था चार्जेस जो मैंने आपको बताया था। अभी हम लोग वहाँ पे जाके सोचेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है, स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्केलिंग। सो लेट्स गो देयर एंड एन्जॉय दैट। तो अभी हम लोग चल के जा रहे हैं स्नॉर्केलिंग के लिए, स्कूबा डाइविंग के लिए, बिकॉज अभी कंफर्म नहीं है कौन कौन स्कूबा डाइविंग करेगा स्नॉर्केलिंग करेगा। बट लेट्स सी, मेरा फर्स्ट प्लान तो स्नॉर्केलिंग करना है, ताकि मुझे देखना है कि स्नॉर्केलिंग में इट्स नॉट दैट डीप। तो मुझे देखना है कि कितना अंदर तक है और क्या क्लैरिटी कितना है। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि स्कूबा डाइविंग करना है या नहीं। तो द रीज़न वाई वी आर गोइंग वॉकिंग इज़ बिकॉज गाड़ी की जो सीट्स है, गाड़ी नहीं है और उसमें सीट कवर्स नहीं है। तो अगर हम लोग वहाँ पे पूरा पानी में भीगने के बाद फिर सीट पे तो बैठ नहीं सकते, इसलिए वी आर गोइंग वॉकिंग। तो अभी हम लोग चल के जा रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड स्नॉर्केलिंग करने के लिए। गाइस फाइनली इतना चल के इतनी धूप में हम लोग अभी पहुंच चुके हैं वो बीच पे जहाँ पे स्नॉर्केलिंग स्कूबा डाइविंग होता है। सो नाउ वी विल गो एंड चेक द रेट विद देम। तो कोई दिख तो नहीं रहा है करने के लिए फ़िलहाल, कोई कस्टमर्स है नहीं। आई थिंक विल बी द फर्स्ट वंस, लेट्स सी। देखिए बीच कितना खाली है। डाइविंग के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी कन्विंस किया कि स्नॉर्केलिंग में तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, तो उन्होंने बोला कि स्कूबा डाइविंग करो। और हम लोग जो रिजॉर्ट में रखे थे नक्षत्र, सो नॉर्मली 1500, तो उन्होंने 200 का डिस्काउंट दिया। स्टिल नॉट मच बट नॉट बैड ऑल्सो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर स्कूबा डाइविंग। दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन स्कूबा डाइविंग। आई एम सीरियसली एक्साइटेड। सो देखते हैं कैसा है अभी।
है।